अच्छा, we're going to esters हमने काफी कर लिया था, ठीक है? We're going to start with carboxylic acids. जिसमें अच्छा, so when you talk about carboxylic acids, the first thing is पहले तो वो पहले naming वगैरह कर लेते हैं कि carboxylic acids, what were these compounds? किसको कहते थे carboxylic acids? तो you had R, अच्छा C double bond O and OH. मतलब this was the functional group. जिसको combine करके भी लिख सकते थे, which was R C double O H. कभी कभार कुछ ज्यादा ही combine करके लिखा होता है, so it's R C O2 H. ठीक है, ये मुख्तलिफ तरीकों से ना मतलब लिखा होता है. This is a carboxylic acid. And the naming of carboxylic acids was how did you name them? नेमिंग इस तरह करते थे कि अगर आपके पास एथेनोइक एसिड है तो नेमिंग तो उसी तरह के if you have ethanoic acid, so that means it's going to have two carbon atoms. And that means कि one of them would be this functional group, which is carboxylic acid functional group, serial bond O and OH, और इसके साथ बाकी H पूरे कर लो, so it's going to be three hydrogens with this. तो ये आपके पास this was a molecule of ethanoic acid. Or propanoic acid, yeah, any other acid, it's going to be the same way. Another thing that happens is there's a general formula that you can use instead of actually drawing the structure. You could come up with a general formula, which is इसका general formula होता था CN H2N plus 1 COOH. ठीक है, that was the quick way of writing the formula of any carboxylic acid. इसमें बस एक issue था कि N is actually one less than the number of carbon atoms. यानी if you have the number of carbon atoms, propanoic acid है 3 है, तो N की value 2 ले रही है. Number of carbon atoms minus 1. ठीक है, you have to subtract 1 from it. For example, if I have pentanoic acid and I want to draw the structure of pentanoic acid. Now for that, a few things have to be done. Pentanoic acid is कि कार्बन्स कितने दे 5 क्योंकि पेंट है, लेकिन n की वैल्यू क्या लोगे, यू टेक 4. ठीक है, n should be one less than the number of carbon atoms. तो it's going to be Cn C4 H2n plus 1, यानी 2 into 4 plus 1, that's 9, and COOH. अच्छा, रीजन क्या थी n की वैल्यू 1 कम लेने की कि there's one carbon in carboxylic acid which we are not counting. मतलब अगर आपके पास 5 कार्बन है ना, तो 4 ये and there's one over here, तो 5 ही आ जाता है, टोटल 5 ही आता है. ठीक है, तो बस लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि when you use the general formula of a carboxylic acid to figure out the formula of any carboxylic acid, N is going to be one less than the number of carbon atoms. फिर इसकी physical properties, ये सारा वो clear है? Is this clear, Sidra? Yes. अच्छा, then physical properties. Carboxylic acids, most of the acids that you see around you, for example, vinegar. For example, vinegar is is acidic. It's ethanoic acid, or it contains ethanoic acid. फिर apples के अंदर there's malic acid. ये oranges के अंदर you have citric acid. These are all forms of carboxylic acid. I mean, they have serial bond O and OH. But अगर मैं let me quickly just 1 second show you कि what does a citric acid molecule look like जो आपके oranges उसमें होता है. So 1 second, let me find the molecule.
अच्छा नहीं वो ये आ गया एक्चुअली, ठीक है। अच्छा this one, if you look at this molecule, this one over here, so you'll notice कि I mean this is a citric acid molecule. Actually you'll notice कि if I go back, what do all carboxylic acids have? They have a serial bond O and OH. तो ये जो citric acid का molecule यहाँ पे drawn है ना, I think this one over here, ये जो नीचे है, ठीक है, maybe थोड़ा सा नीचे हो जाए, नहीं हो रहा। अच्छा this one is a better representation of citric acid. So this is a citric acid. Look over here. There's a serial bond O and OH. Serial bond O and OH. तीन दफा आ रहा है carboxylic acid, मतलब functional group. Serial bond O and OH. So this is a citric acid molecule. इससे all molecules भी होंगे, malic acid and so on. Uh, so all of them have this particular functional group in it. एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं. Complicated molecules होंगे. There are more than there could be many carboxylic acid functional groups. और एसिड्स जो होते हैं दे टेस्ट सावर, मतलब आप किसी को भी टेस्ट करो ना, विनेगर को, एप्पल्स तो नहीं, खैर एप्पल्स में मैलिक एसिड इज नॉट इन सच लार्ज क्वांटिटी, लेकिन ऑरेंजेस दे हैव अ सावर टेस्ट. अच्छा टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, दे आर ये तो चलो एसिड्स के साथ हम डिस्कस कर लेंगे, मगर लिख लेते हैं यहाँ पे. अच्छा द मेन फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. I mean mostly liquids. They're not gases. अच्छा फिर एक और प्रॉपर्टी है कि poor conductors of electricity. Yeah, actually, well, they're weak conductors. They do conduct. So why do they conduct electricity? Because they're weak acids. As they are weak acids, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने के लिए तो आयंस चाहिए, तो दे वीक एसिड्स और वो फिर सॉल्यूशन के अंदर ना H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे प्रोड्यूस H+ आयंस by partially ionizing. So they produce they produce a few H+1 ions. यानी HCl जो होगा वो fully ionized होगा. It's going to produce a lot of H+1 and Cl-1 ions. Carboxylic acids जो है ना वो भी इतना अच्छे तरीके से आयनाइज नहीं होते. तो वीक एसिड्स की उसको पढ़ ही लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज के अंदर आ गए. सो वीक एसिड्स, नंबर वन कि व्हेन यू टॉक अबाउट वीक एसिड्स, अच्छा व्हेन यू टॉक अबाउट वीक एसिड्स तो इसमें है कि अच्छा इसमें ये कि वीक एसिड्स partially ionized in aqueous state to produce H+1 ions. Yeah, that's the definition of a weak acid. And the other thing is, yeah, that's the definition of a weak acid. इसको एक सेकंड थोड़ा सा. This is the definition of a weak acid. Just 1 second, बोर्ड को क्या हो गया? ठीक है. अच्छा, so if I take any carboxylic acid molecule, let's say I take CH3COOH, उसके molecule को मैं लेता हूँ. अच्छा बोर्ड हैंग कर रहा है, hopefully ना करे अभी. ethanoic acid. अच्छा, so you have ethanoic acid, वो थोड़ा बहुत ना आयनाइज करेगा. और हमेशा याद रखना ये जो एंड वाला H है ना, बिल्कुल एंड वाला H,
ये आयनाइज करेगा. It's always the functional group H that breaks away, and it's going to break away and it's going to produce CH3CO minus 1 ion, and it's going to release an H positive ion. अच्छा, this one, CH3 CO minus 1 ion, and it's going to produce this H plus 1 ion. तो अगर इसका मैं full structure draw करूँ ना, it's going to be, if I draw the full structure, it's going to look like this. कि जो functional group है ना, उसका जो ये N वाला H है ना, OH वाला H, always remember it's always the OH that breaks away. So CH3 C double bond O minus 1 is left and H plus 1 dissociates and breaks away. लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि if you have 1,000 molecules of ethanoic acid, तो उनमें से कोई एक आध molecule ही break down कर रहा होगा. It's only partial ionization. It's very weak ionization. It's a weak acid. Not a lot of H plus 1 ions are going to be produced. ठीक है. Iram, is this clear? Mahad clear है? बाकियों को clear है? Saad, Ahmed clear है? Yes. Yes, sir. अच्छा, so the next part है कि ये तो हमने एसिड्स की बात शुरू कर दी अब, ठीक है, और इसी वजह से ना ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्शन करता है. पीएच क्या होगा इसका? पीएच जो होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रांग पीएच. इसका क्या करना है? 4 और 5. इसके इर्द गिर्द ही हवर कर रहा होगा. इट्स नॉट अ स्ट्रांग एसिड. ठीक है, नॉट अ स्ट्रांग एसिड. अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डालोगे ना, मेक श्योर कि वीक एसिड्स का जो कलर होता है दैट्स ऑरेंज इन कलर. मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए रेड होता है. वो मैंने एक शीट दी थी, डेटा शीट. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है दैट्स केपेबल ऑफ एक्चुअली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंडिकेटर. इट्स केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स. तो weak acid, it's going to look orange. न्यूट्रल स्टेट के अंदर ग्रीन होता है. एल्कली के अंदर इट्स वीक एल्कली के अंदर इट्स ब्लू. पर्पल हो जाता है स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर. अच्छा, कमिंग बैक, अब बात शुरू होगी है एसिड्स की. तो पहले एसिड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, और रिवीजन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एसिड्स. तो एसिड्स के ढेर सारे रिएक्शंस थे, so we're going to study those reactions. तो पहले वो रिवाइज कर लेते हैं. Reactions of acids. Now all acids have the same thing. They produce H plus 1 ions. They are proton donors. They're known as proton donors. बल्कि यहाँ पे ना प्रोटॉन H plus 1 को कहते हैं. तो क्योंकि H plus 1 ion के अंदर ना होता ही एक प्रोटॉन है. So whenever you hear the term proton, it's basically, I mean, they're basically referring to H plus 1 ions. अच्छा, acids के क्या क्या reactions थे? One by one we will go through them. First one was number 1. It was a metal with an acid. It produces salt plus hydrogen gas. ठीक है, this is produced. Metal plus acid produces salt plus hydrogen gas. Second reactions, पहले सारे reactions ही लिख लेते हैं. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा comment कर दूं कि सारे metals, not all metals react. Remember we did the reactivity series as well. A long time back we did the reactivity series in which some metals react explosively, some metals react very slowly. उसके अंदर एक term use होती थी mazet. Mazet वो metals थे जिनके reactions जो होते थे they were normal, not too fast, not too slow. Magnesium, aluminum, zinc, iron and tin. नीचे जाते थे reactivity series में, the reactions would become extremely slow. कि आपके पास gold का reaction होता ही नहीं है, silver almost no reaction, copper no reaction. lead जो होता था concentrated acid के साथ, highly concentrated acid के साथ react करता था. और फिर उससे ऊपर जाते थे reactivity series में, तो reactions they would kind of become explosive, like sodium वो explosively react करता है. As a second reaction was that, so again the board is not responding. The second reaction is कि ठीक है, something wrong with the internet. Second reaction is
Is my voice, can everyone hear me properly? बाकी अहमद आवाज आ रही है? Yes, sir, but there is a little disturbance. ठीक है, नहीं अगर ज्यादा है तो फिर हम पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि मुझे भी बार बार आ रहा है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज सही है? इज्जत आवाज ठीक है? Yes. ठीक है, Sir, it's okay for me. अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, so next one is K base plus acid. Actually base का भी मतलब although it is a base, metal oxide, metal hydroxide. अच्छा, metal hydroxide उनका रिएक्शन और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी। These are all bases. Base plus acid क्या होता है? Salt plus water. So that's another reaction that we previously did, salt plus water. Then there was a third reaction, ये भी base plus acid, इसलिए मैंने उसको base नहीं लिखा, ये भी base. Carbonate plus acid is the same reaction. It's also classified as an acid-base reaction. This would produce salt plus water plus carbon dioxide. Then there was one more which is ammonia plus acid. तो ammonium salt बनती है. अच्छा, it produces ammonium salt. तो पहले तो इस सारों की कोई और रिएक्शन मैंने मिस तो नहीं किया एसिड्स नहीं, that's pretty much it. बाकी सारे रिएक्शंस जो हैं they were decomposition of मतलब एसिड्स के ही मेन चार रिएक्शंस थे. We're going to start discussing these reactions one by one. Okay, we're going to try and make, अच्छा इसके लिए ना पहले मैं let me send you, ठीक है, make these three reactions and send the equations.